गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है द वार्निंग साइंस इन इंडियाज इम्पोर्ट बिल। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली अर्ज किया है सिटीजन्स को कि वो स्पेंडिंग जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, एडिबल ऑयल्स पर, गोल्ड इंपोर्ट्स, फॉरेन ट्रैवल और बाकी के नॉन एसेंशियल फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर्स पर कम करें। अब ये अपील जो है वो अब अनप्रेसिडेंटेड है। और अगर हम इसको कंपेयर करें तो 1991 का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस था उसके ही इसके कंपैरिजन में ये अपील आई है। अब देखें हम कंसर्न्स क्या हैं कि इंडिया का जो मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट है $333 बिलियन पहुंच चुका है और ये 17% बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और ये इंपोर्ट्स जो हैं इसमें 7% सर्ज हुए हैं, ऑल टाइम हाई पर हैं, $775 बिलियन पर हैं। और आईएमएफ के क्रूड ऑयल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से ऑयल प्राइजेस जो हैं वो 53% बढ़े हैं सिंस द कन्फ्लिक्ट बिगैन। और इंपोर्ट्स ऑफ प्रेशियस मेटल्स जो हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं शार्पली। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुए हैं बाय ओवर 5%। इंडिया का जो गोल्ड इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो एक मेजर कंसर्न है। गोल्ड इंपोर्ट्स लगभग 82% बढ़े हैं अप्रैल 2026 में एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। हायर ड्यूटीज़ हमें देनी पड़ रही हैं फिजिकल गोल्ड पर, और उसकी वजह से जो है इन्वेस्टमेंट ईटीएफ्स के थ्रू आ रही है रादर दैन सिग्निफिकेंट जो है उससे फिजिकल गोल्ड के उस पर। तो इंडिया का जो हैवी रिलायंस है इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स पर, वो भी एक वीक आस्पेक्ट है। गवर्नमेंट इसलिए जो है चाहती है कि हाउस होल्ड कंजम्पशन रिड्यूस हो ताकि फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लोज कम हो। इंडिया जो है इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स पर भी डिपेंडेंट है, और फर्टिलाइजर इंपोर्ट जो है 31 से लेकर 37% ऑफ इंडियाज़ रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं क्योंकि वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी वजह से इंडिया का जो फर्टिलाइजर इंपोर्ट बिल है वो 80% बढ़ गया है। डिपेंडेंस हमारी जो है अभी भी इंपोर्ट ऑफ क्रिटिकल कमोडिटीज़ है, जैसे गोल्ड, एडिबल ऑयल्स, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो अगर हम देखें, चाहे आत्मनिर्भर भारत अभियान हमने अपनाया 2020 में, लेकिन प्रोग्रेस लिमिटेड रही है खासकर स्ट्रेटजिक सेक्टर्स में। अगर हमने पीएलआई स्कीम भी इंट्रोड्यूस की, लेकिन फिर भी इंडिया जो है हैविली डिपेंडेंट है इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर। जो एफर्ट्स थे कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन एक्यूमुलेटर्स और बैटरीज की हम बढ़ाएं, उससे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हो, वो भी कम ही उसने अच्छा परफॉर्म किया है। इंपोर्ट्स इनका भी बढ़ा है 50% से। इंडिया का जो मूव था कि ग्रेटर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और क्लीन मोबिलिटी हो, उससे भी जो है डिपेंडेंस हमारी इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर इंक्रीज़ हो रही है। ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो रहा है। आरबीआई जो है सिलेक्टिवली इंटरवेन भी कर रहा है करेंसी मार्केट्स में जब जब पॉसिबल है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो लगभग $21 बिलियन जो है वो फॉल हुए हैं अगर हम देखें फरवरी 2026 के एंड से लेकर अभी तक। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया बिटवीन इंडिया एंड नॉर्वे। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया और नॉर्वे ने अपने बायलैटरल रिलेशनशिप को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर एलिवेट किया है। इंडिया और नॉर्वे लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप शेयर करते हैं जो कि शेयर्ड डोमेस्टिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ग्रोइंग कोऑपरेशन पर डिपेंडेंट है। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों कंट्रीज़ के बीच में 1947 में एस्टैब्लिश हुए। नॉर्वे अमंग द फर्स्ट कंट्रीज़ था जिसने रिकग्नाइज़ की इंडिया की सोवरेनिटी। जो लास्ट विजिट थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की नॉर्वे में, वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की थी 1983 में। जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है इंडिया और नॉर्वे के बीच में, वो स्टेडीली ग्रो हुई है। दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी, रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, इन सब पर कॉपरेट करते हैं। दोनों कंट्रीज़ एक्टिवली पार्टिसिपेंट्स हैं मल्टीलैटरल फोरम्स में भी। नॉर्वे ने इंडिया की जो बिड फॉर परमानेंट मेंबरशिप को भी सपोर्ट किया है कंसिस्टेंटली। और इकोनॉमिक रिलेशंस देखें तो बायलैटरल ट्रेड दोनों के बीच में 1 बिलियन के आसपास का है। नॉर्वेजियन कंपनीज जो है उन्होंने इंडिया में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। गवर्नमेंट पेंशन फंड जो ग्लोबल ऑफ नॉर्वे है, वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोवरेन वेल्थ फंड्स हैं। उनकी सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडियन कंपनीज और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। रिसेंटली जो इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप हुआ है, उसमें नॉर्वे भी इंक्लूडेड है। अब अगर हम देखें तो हमारा डायस्पोरा वहाँ पर लगभग 30,000 का है। साइजेबल नंबर्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में। और मोर देन 40 इंडियन एसोसिएशंस नॉर्वे में कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट थी, फर्स्ट एवर विजिट थी ये नॉर्वे की, और ये ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पे हमारा जो है बायलैटरल रिलेशनशिप अब आ गया है। और पीएम मोदी जो है वो 4 नेशन यूरोपियन टूर में है, उनमें से ये एक नॉर्वे की विजिट थी। कई तरह के MOU साइन किए गए हैं। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट आउटकम था कि जो साइन किया गया है ट्रायंगुलर कोऑपरेशन एग्रीमेंट, मतलब इस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया और नॉर्वे जॉइंटली ह्यूमन डेवलपमेंट सॉल्यूशंस देंगे ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ को यूजिंग इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इंडिया का जो लीडरशिप है डिजिटल टेक्नोलॉजी में कितनी खास है। ठीक है, तो नॉर्वे ने अनाउंस किया है कि वो इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव को ज्वाइन करेंगे। पीएम मोदी ने नॉर्वे के रोल को एज एन की आर्कटिक नेशन भी रिकग्नाइज़ किया है, क्योंकि वो हमारे आर्कटिक रिसर्च स्टेशन हिमाद्री में हमारे यहाँ सपोर्ट देते हैं।
पीएम मोदी को उन्होंने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से जो है वो अवार्ड भी सम्मानित भी किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्माइल मिशन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चाइनीज़ और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज लॉन्च कर रही हैं स्माइल, जो कि फर्स्ट जॉइंट मिशन है इन्वेस्टिगेट करने का अर्थ के डिफेंसेस अगेंस्ट द सन। स्माइल मिशन जो है वो सोलर विंड मैग्नेटोस्फेयर आयोनोस्फेयर लिंक एक्सप्लोरर, एक जॉइंट ईएसए और चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज का मिशन है। स्टडी करेगा इंटरेक्शन ऑफ सोलर विंड अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर और आयोनोस्फेयर के साथ, कैप्चर करेगा फर्स्ट एक्सरे इमेजेस अर्थ की प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड शील्ड की। इसको पोजीशन किया जाएगा एट अबाउट 1.21 लाख किलोमीटर अबव अर्थ नॉर्थ पोल। स्माइल वे करता है लगभग 2600 kgs और इसकी मिशन लाइफ जो है वो अबाउट 3 ईयर्स है। और इसको डिज़ाइन किया गया है आंसर्स लेने के लिए इंटरेक्शन ऑफ स्ट्रीम ऑफ सोलर विंड और अर्थ के मैग्नेटिक शील्ड। ये हेल्प करेगा सोलर फिजिसिस्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए स्पेस वेदर, और हेल्प करेगा फॉरकास्ट करने के लिए कोई भी इम्पेंडिंग सोलर स्टॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल वन हेल्थ मिशन। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 5th मीटिंग जो है साइंटिफिक स्टीयरिंग कमेटी की ऑन नेशनल वन हेल्थ मिशन दिल्ली में हुई है होस्ट। और ये नेशनल वन हेल्थ मिशन 2024 में लॉन्च हुआ था। कोलैबोरेटिव मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो यूनाइट करता है ह्यूमन, एनिमल और इन्वायरमेंटल हेल्थ सेक्टर्स को। ये रिकग्नाइज करता है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ये इन डोमेन्स को। ये लॉन्च किया गया था सेफ गार्ड करने के लिए नेशनल हेल्थ, यूनिफाई करके ह्यूमन, एनिमल और इन्वायरमेंटल सर्वेलेंस सिस्टम्स को। आईसीएमआर अंडर द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र इसको जो है इसकी नोडल एजेंसी है। इसके जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो हेल्थ मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र इसके वाइस चेयर हैं। जो इसकी स्टीयरिंग कमेटी है साइंटिफिक वो पीएसए चेयर करते हैं, और सेक्रेटरीज जो डीजीज हैं सभी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स के वो इसके मेंबर्स हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीएम श्री स्कीम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए पीएम श्री स्कूल इनिशिएटिव स्टेट में। तो पीएम श्री जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्कूल एजुकेशन को, ताकि डेवलप हो सके 14,500 मॉडल स्कूल्स अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये स्कूल्स मैनेज किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, लोकल बॉडीज़, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। अब इसमें क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस होगा, टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, हॉलिस्टिक लर्निंग अप्रोच फॉलो की जाएगी, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क होगा, और 5 साल के लिए स्कीम है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इन स्पेस। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। 9 इंडियन स्पेस टेक कंपनीज जो है जो पार्ट थी डेलीगेशन का इन स्पेस के, उन्होंने मल्टीपल पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस की हैं वेनिस में, इटली में। तो इन स्पेस एक ऑटोनॉमस एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की, इनेबल करती है और फैसिलिटेट करती है पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, और ये रिस्पॉन्सिबल है प्रमोट, इनेबल, ऑथोराइज और सुपरवाइज करने के लिए कई तरह के स्पेस एक्टिविटीज़ नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़ की। ये एजेंसी एक्ट करती है एज एन इंटरफेस बिटवीन इसरो और नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़। ये असेस करती है नीड्स और डिमांड्स ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स को। अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, सोशल इशूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। WHO ने ऑनगोइंग अबोला आउटब्रेक जो DR कॉन्गो में हुआ है और युगांडा में हुआ है उसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया है। तो PHEIC होता क्या है, एक इमरजेंसी डिक्लेरेशन जो WHO अनाउंस करता है इन रिस्पॉन्स टू क्राइसिस ऑफ इंटरनेशनल प्रोपोर्शंस, जिससे पीपल्स हेल्थ अफेक्ट होती है। ये WHO की हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्लोबल हेल्थ अलर्ट है। ये डिक्लेरेशन जो है वो, इसमें इमीडिएट एक्शन चाहिए होता है ग्लोबल लेवल पर अगेंस्ट इंटरनेशनल स्प्रेड ऑफ डिसीज़। ये सब्जेक्ट है टू इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस। डिक्लेरेशन रिव्यू की जाती है ट्राई मंथली बेसिस पर। और इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस क्या है, ये अडॉप्ट की जाती हैं बाय हेल्थ असेंबली, और अडॉप्ट की गई थी बाय हेल्थ असेंबली 1969 में, प्रिवेंट करने के लिए स्प्रेड ऑफ डिसीज़ अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। तो एक न्यू IHR जो है अडॉप्ट किया गया मई 2005 में। IHR 2005 जो है वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है अमंग 196 कंट्रीज़ जो अब होल्ड करता है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी को। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is the warning signs in India's import bill. PM Modi recently urged citizens to reduce the spending on petroleum products, edible oils, gold imports, foreign travel and other non-essential foreign currency expenditures. So this is kind of a appeal which can be compared to the 1991 balance of payments crisis that India suffered.
with which India suffered. So what has happened is that India's merchandise trade deficit has reached a record high of $333 billion last year. It was driven by imports, which surged 7% to an all-time high of $775 billion. Oil prices have risen by 53% since the conflict began. Imports of precious metals increased sharply. Gems and jewelry exports declined by 5%. Gold imports rose by 82% in April 2026 as compared to the previous year. Higher duties on physical gold may further encourage investment through ETFs rather than significantly reducing overall demand. India's heavy reliance on imported edible oils remain one of the weakest aspects of agricultural performance. With domestic oilseed production failing to keep pace, the government is seeking reduced household consumptions to contain foreign exchange outflows. India's dependence on imported fertilizers has worsened due to rising global prices and geopolitical disruptions. Over the past 5 years, fertilizers imports were met through fertilizers were met through imports to satisfy 31 to 37% of India's requirements. Supply disruptions, which were linked to West Asia conflict, have been the major cause of this particular issue. There has been continued dependence on imports of critical commodities like gold, edible oils, fertilizers, etc. So, despite the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, progress has been very limited in several strategic sectors. Even after substantial incentives under the PLI scheme, India remains heavily dependent on imported electronic components. Efforts to boost domestic production of accumulators and batteries to support electric manufacturing, vehicle manufacturing, has also fallen short. India's move towards greater technological advancement and clean mobility is increasing dependence on imported components. A widening trade deficit also poses additional risks to the already weakened rupee. RBI has been selectively intervening in currency markets to prevent a sharp depreciation of the rupee. RBI's ability to continue such interventions is constrained as foreign exchange reserves have fallen by over $21 billion. So the next topic is green strategic partnership between India and Norway. This topic is important for international relations. So India and Norway have elevated their bilateral relationship to a green strategic partnership, and India and Norway share a long-standing partnership built on shared democratic values, mutual respect, and growing cooperation across diverse sectors. Diplomatic relations between India and Norway were established in 1947. Norway was among the first countries to recognize India's sovereignty. The last visit by an Indian Prime Minister to Norway was by Prime Minister Indira Gandhi in 1983. Strategic partnership between India and Norway has grown steadily, with both countries sharing common views on rules-based international order, dialogue and diplomacy, reform of global institutions, combating terrorism. Both nations are active participants in multilateral forums. Norway has also consistently supported India's bid for permanent membership. So, bilateral trade between India and Norway was $1.05 billion in 2024-25. Norwegian companies have invested in India in sectors including renewable energy, telecommunications, etc. Government Pension Fund of Norway is having one of the major investments in Indian companies and government securities. Norway is also participant in the India EFTA trade agreement. So about 30,000 people of Indian origin live in Norway, with sizable numbers of Indian students and faculty members. There are more than 40 Indian associations in Norway. Prime Minister Modi, this is Prime Minister Modi's first ever visit to Norway, and it's a significant milestone where both countries have elevated their partnership to a green strategic partnership. Visit took place as part of PM Modi's four-nation European tour. Multiple memorandum of understanding were signed during this visit. A significant outcome is the signing of a triangular cooperation agreement in which both countries will jointly provide human development solutions to Global South, especially using India's digital public infrastructure. Norway also announced its decision to join the Indo-Pacific Oceans Initiative. PM Modi also acknowledged Norway's key role as an Arctic country and expressed gratitude for its support in operating India's Arctic Research Station Himadri. So, in a significant gesture of bilateral friendship, PM Modi was awarded the Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by the Norwegian King. Okay. So the next topic is Smile Mission. This topic is important for your science and tech section. Chinese and European space agencies are launching Smile, which is their first joint mission to investigate Earth's defenses against the sun. So this will study the interaction of the solar wind
with the Earth's magnetosphere and ionosphere, and it aims to capture the first X-ray images of Earth's protective magnetic shield in action. And it will be positioned at about 1.21 lakh kilometer above Earth's north pole. SMILE weighs about 2600 kgs and it has a mission life of about 3 years. So this SMILE mission is designed to get answers of interaction of a stream of solar wind with Earth's magnetic shield. It will also help solar physicists better understand the space weather, and it will also help in forecasting any impending storm. So the next topic is National One Health Mission. This topic is important for your governance section. So fifth meeting of the Scientific Steering Committee on National One Health Mission was held in New Delhi. It was launched in 2024. It is a collaborative multidisciplinary approach which unites human, animal and environmental health sectors. It recognizes the interconnectedness of these domains. It was launched to safeguard national health by unifying human, animal, and environmental surveillance systems to ensure robust pandemic preparedness and integrated disease control. ICMR is under the Office of ICMR under Office of Principal Scientific Advisor is the nodal agency of the same. The executive committee consists of the Health Minister and PSA as Vice Chair. So the scientific steering committee is consisting of PSA as the chairperson and secretaries or DGs of other departments as members. So the next topic is PM Shri scheme. This topic is important for our governance section. Union Education Minister signed a MOU with West Bengal government to implement the PM Shri school initiative in the state. So PM Shri is a centrally sponsored initiative launched by Government of India under the guidance of Ministry of Education. It aims to transform school education across the nation by developing over 14,500 model schools, which reflect the spirit and vision of the National Education Policy of 2020. These schools will be managed by the central government, state and union territory governments, local bodies, KVS, Navodaya Vidyalayas, and the aim is to enhance infrastructure in these schools, integrate technology, holistic learning, school quality assessment framework, and the scheme will be implemented for a time period of 5 years. So the next topic is in space. This topic is important for your science and tech section. 9 Indian space tech companies which were part of the delegation led by the ICM in space have signed multiple partnerships and collaborations at the recently held space meeting Veneto in Venice, Italy. In space functions as an autonomous agency of the Department of Space. It is formed following the space sector reforms to enable and facilitate the participation of private players. It is responsible to promote, enable, authorize, and supervise various space activities of non-governmental entities. It acts as an interface between ISRO and non-governmental entities. It also assesses the needs and demands of private players. It is headquartered in Ahmedabad, Gujarat. So the next topic is public health emergency of international concern. This topic is important for your governance section. World Health Organization has recently declared the ongoing Ebola outbreak in DR Congo and Uganda as a public health emergency of international concern. So PHEIC basically is an emergency declaration formally announced by the World Health Organization in response to a crisis of international proportions which affect people's health. It is WHO's highest level of global health alert. Such a declaration may require immediate action at a global level against the international spread of disease. A PHEIC is subject to international health regulations. The declaration is reviewed on a tri-monthly basis and renewed as needed. So what is international health regulations? They were adopted by Health Assembly in 1969 to prevent the spread of disease across national borders. A new IHR was adopted in 2005. And IHR 2005 was an international agreement among 196 countries, and WHO is deemed as the coordinating body of this agreement. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.